अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, ये मेरे पास जो है वो बच्चों के टेस्ट्स हैं, इवैल्यूएशन के लिए आए हुए हैं। तो इवैल्यूएशन मैं जो है वो आप लोगों के साथ करूँगी। ये जो वीडियोस होती हैं ये एक्सट्रीमली क्रूशियल होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब हम टेस्ट चेक करते हैं आपके सामने, तो आपको समझ आ जाती है कि जो भी उसके अंदर ग्रामर के इश्यूज़ हैं या स्पेलिंग की मिस्टेक है, या आपको समझ आ जाती है कि कौन-सी गलतियाँ जो है वो आपने करनी है और कौन-सी नहीं करनी। ठीक है? अच्छा जी, इस टेस्ट को जो है वो हम देखते हैं। Acha, Santiago is a central character of the novel. He is the hero of the novel. He is a fisherman by profession. Locality of he lives in the locality of fisherman. अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि man नहीं आएगा, men आएगा। fisherman यानी कि वो मछुआरों की लोकेलिटी में रहता था, on the coast of Havana. अच्छा जी, he is a man of thin and lean body. He has deep wrinkles in the back of his neck. His hands have deep scars. Is old except his eyes. They are blue like the water of the sea. They are cheerful and undefeated. He is very expert fisherman. अच्छा देखिए, यहाँ very का यूज़ जो है वो गलत है, ठीक है? He is very expert fisherman नहीं, he is an expert fisherman, और expert के साथ फिर आप an लगा देंगे. The boy Manolin tells us that he is a very good fisherman. He is very careful and cautious in fishing and boating. Okay. He is quite familiar with the weather of the sea. He has passed most of his time in Mexican Gulf. Okay. Santiago is a determined and resolute person. Okay. He is ridiculed. C-U-L-E-D. He is ridiculed by his fisherman as unlucky नहीं, as being unlucky. ठीक है, कि उसको unlucky समझा जाता है. As a fisherman he has unsuccessful in catching even a single. He has been unsuccessful. ठीक है. अच्छा देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास आती हैं. एक आपके पास जो लफ्ज़ हैज़ होता है ना, उसका मतलब होता है रखना, ठीक है, और एक आपके पास होता है हैज़ बीन का लफ्ज़ होता है जब कोई काम जारी भी हो और मुकम्मल भी हो. अगर आप लोगों ने मेरी टेंसेस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसमें आप जो है ना वो देखें, उसमें 12 के 12 टेंस जो है वो मैंने बड़े मज़ेदार तरीके से आप लोगों को कवर करवाए हैं. तो यहाँ पे हैज़ बीन आएगा कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ एक बड़ी फ़िश को पकड़ने में फॉर 84 डेज़, बट ही डज नॉट यील्ड, ये क्या है, यील्ड होगा, टू हिज फाइट ही डिसाइडेड टू ट्राई. अच्छा, ये सेंटेंस आपने गलत कर दिया. अच्छा, नेक्स्ट है जी, ही डिसाइड्स टू ट्राई हिज लक अगेन. इट इज़ ऑन द 84th day that he hooks a marlin. He hooks, अच्छा, a marlin जो है ना वो एक स्पेसिफिक नेम है एक फ़िश का, ठीक है. जब स्पेसिफिक कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे आप द का यूज़ करते हैं. ही इज़ अ ग्रेट फाइटर. हिज फाइट विद द शार्क्स इज़ रिमार्केबल. अच्छा, आप लोगों जब भी मेरी ये टेस्ट चेकिंग वीडियोस देखें तो आप लोग जो है वो अपने साथ कोई छोटी सी कॉपी या रजिस्टर लाजमी रखें और इन गलतियों को नोट करते जाएं. इससे ये होगा कि एट द एंड ऑफ द डे आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे आपके पास ना बड़े खूबसूरत से नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सारी गलतियां जो है वो आप कभी भी रिपीट नहीं करेंगे. अच्छा जी, Santiago is very inspiring character. He is born in humble circumstances. He was born. ठीक है, यहाँ पे was आएगा. जब भी याद रखें, जब भी आप किसी स्टोरी का जिक्र कर रहे होते हैं ना, कोई आप कहानी सुना रहे होते हैं, तो याद रखें कि कहानी हमेशा माजी का हिस्सा होती है और उसमें आप लफ्ज़ was का यूज़ करते हैं और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं जिसमें मोस्टली जो है वो ईडी पे ये फॉर्म्स एंड होती हैं. अच्छा जी, he was born in humble circumstances. A study of his character tells us that he should not use ignoble methods to defeat. That we should not. ठीक है, over adversary. ठीक हो गया. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अच्छा, इसी तरह से हमारे पास ये वाला टेस्ट है, इसको चेक करते हैं. He is a great fighter.
His fight with sharks is remarkable. अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी कोई भी स्टोरी है ना, आप जैसे ये जो सेंटियागो वाली स्टोरी है, इसको अगर आप इसकी फॉर्म में लिख रहे हैं ना कि वो एक अच्छा फिशरमैन है, वो जो है ना उसकी फाइट शार्क के साथ जो है वो बड़ी मेमोरेबल है, तो आपने फिर थ्रू आउट इज़ का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है? और यानी कि थ्रू आउट प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे। ये भी एक तरीका होता है लिखने का कि जैसे आप उर्दू में भी अगर कोई कहानी लिखे ना, तो आप यूँ भी बाज़ औक़ात कह देते हैं कि वो वहाँ जाता है, फिर वो वहाँ उससे मिलता है, ठीक है? फिर वो दोनों मिलकर उस जगह जाते हैं। इस तरह भी स्टोरी सुनाई जाती है, लेकिन फिर आपने थ्रू आउट इसी पैटर्न को बरकरार रखना होता है। लेकिन मोस्टली आई रिकमेंड कि वाज़ की फॉर्म में ही, यानी कि माज़ी की फॉर्म में ही स्टोरी को जो है ना वो आप लिखा करें। फर्स्ट शार्क इज़ मैको शार्क takes away one a mako shark, okay, takes away 1/4 of the old man's fish. The two sharks that come after him further damage the fish, ठीक है? Okay, the other sharks reduce him to bear to bear the skeleton, no, to the bear skeleton, के बाकी जो मछलियाँ आती हैं वो सिर्फ उसका ढांचा छोड़ती हैं, बट के बाद कॉमा, he is not discouraged, ओके, although, और अच्छा ये देखें, ये although जो है ये नहीं होता although, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, ये all through है, ठीक है? All through his fight with sharks he says, I will fight them until I die, never to submit, never to yield. Okay. He is highly philosophical and idealistic in ideas. Unlike others, he is a man of ideas. He is fully aware of the results of good and bad deeds. During his fights with the big marlin, he prays to, अच्छा देखिए कॉमा लग गया ना, तो यहाँ पे ये जो है ना ये कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे एच जो है वो छोटा ही होगा। जब आप फुल स्टॉप पे किसी बात को एंड कर देते हैं ना, तो उसके बाद फिर आप कैपिटल वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, ही प्रेज टू मैरी इन हिज ऑन वे, ही इज फर्स्ट थिंक किलिंग द मार्लिन अ बिग सिन। नो, ये देखें, उस ये आपके कहने का मतलब ये है कि उसने पहले सोचा कि मछली को मारना गुनाह है। ही फर्स्ट थॉट दैट किलिंग द मार्लिन इज अ बिग सिन, ठीक है? बट लेटर ऑन ही जस्टिफाइज इट एज अ प्रोफेशनल एक्ट, ठीक है? ही मेक द फिलोसफिकल रिमार्क। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा आपने करना होता है। अगर आप वाहिद का यूज़ कर रहे हैं ना, सिंगल नाउन का यूज़ करें, प्रोनाउन का, ही, शी, इट, या वो किसी का नाम हो गया जैसे अली, तो इसके साथ आप हमेशा एस या ई एस का इजाफा जो है वो करते हैं, तो यहाँ पे मेक्स आएगा। आगे चलते हैं। Everything kills everything else in some way. Santiago is a very inspiring character. He born in circumstances, नहीं, he was born in circumstances। आगे अच्छा ये देखें, मोस्टली टेस्ट ऐसे होते हैं जो मैं बच्चों के चेक करती हूँ कि वो जुमले जो है ना वो अधूरे छोड़ देते हैं। ही बॉर्न इन सर्कमस्टांसेस, आगे यानी कि वो पैदा हुआ ऐसे हालात में, ठीक है, तो बात मुकम्मल ना हुई। अच्छा, ही इज़ देयर टू इंस्पायर अस विद हिज हीरोइज्म, हाई मॉरल वैल्यूज़। अच्छा ये देखिए, यहाँ एच बड़ा कर दिया, एच छोटा आएगा क्योंकि यहाँ पे कॉमा है। वैल्यूज़ एंड अबेंडिंग ऑप्टिमिज्म्स, ठीक है? द स्टडी ऑफ हिज करेक्टर tells us that we should continued no we should continued nahi we should continue the fight old odd circumstances till the last moment of our life. In the fight we should not use ignoble methods to defeat our adversary. We should continue be be fight with noble we should continue to be fight with noble high and moral values till the last moment of fight with our enemy. Okay, अच्छा ये शायद पता नहीं ये कहाँ से आया। ओके, ही इज़ वेरी expert fisherman, the boy Manolin
tells us he is the best fisherman. अच्छा, यहाँ पे आपने मैन लिख दिया है, तो मैन जो है वो तो ज़्यादा आदमियों के लिए होता है ना, फिशर मैन आएगा. He is very careful and cautious in fishing and boating. He is quite familiar with the weather of the sea. He has passed most of his time in Mexican Gulf. He learns beforehand when the light breeze will blow and अच्छा, जब भी आप एंड का यूज़ करें तो यहाँ पे आपका कॉमा आ जाता है. ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं ना, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आप अगर नोट करते जाएं ना, कोई एक कॉपी बना लें, हो सकता है कि मैं अपनी वीडियोस जितनी भी बनाऊं उसमें आपको 1000 ऐसे पॉइंट्स मिल जाएं. तो क्या होगा कि 1 2 3 4 करके इनको नोट करते रहें, और इससे क्या होगा, इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ 6 months 1 year आपके पास ऐसे नोट्स होंगे जो किसी और के पास नहीं होंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दैट यू विल नॉट बी रिपीटिंग दिस मिस्टेक्स इन योर लाइफ, इंशाल्लाह. अच्छा जी, and for how long time it will continue. Okay. Santiago is a determined and resolute person. He is ridiculed by the fellow fishermen as unlucky. As a fisherman, he has been unsuccessful in catching even a single fish for 84 days, but he does not discourage. देखें, but he does not discouraged. यहाँ पे does का जो इस्तेमाल है ना वो गलत है. But he is not discouraged. ठीक है, is not discouraged, ये is not discouraged. ठीक है, अब ये देखें, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, they're extremely crucial. He decided to try his luck again. It is on the 85th day that he hooks a marlin. अच्छा, मोस्टली ऐसे होता है कि मैं जो अपनी वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे, तो मैं उसमें काफ़ी एनर्जेटिक होकर जो है ना वो बनाती हूँ. दिस टेस्ट चेकिंग वीडियोस, ये वो टाइम है मेरे डे का जब मैं बहुत रिलैक्स होकर इन टेस्ट को चेक करती हूँ. इसलिए आई एम नॉट स्ट्रेसिंग एवरीथिंग आउट कि मैं चीख चीख कर लोगों को बता रही हूँ कि ये नहीं करना, वो नहीं करना. हाँ, आई डू इट इन माई ऑल ऑफ माई अदर वीडियोज़, लेकिन ये जो वीडियोज़ हैं आई एम टोटली रिलैक्स एंड आई वॉन्ट यू टू बी रिलैक्स एज वेल. और मज़े से बस इंजॉय करें. मैं चेक कर रही हूँ, आप मुझे चेक करता हुआ देखें और रिलैक्स होकर सीखें जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन contact me on my WhatsApp, or you can also evaluate your work. This is my WhatsApp number, और इस पे आप मुझसे अपना जो टेस्ट हैं वो evaluate करवा सकते हैं. I teach CSS students, PMS स्टूडेंट्स. आप अगर अपना essay, अपना प्रेसी, अपनी जो क्वेश्चंस होते हैं पाक फेयर के या किसी भी सब्जेक्ट के, वो मुझे बता सकते हैं. I evaluate them and also I teach ADA, ADS students as well. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अच्छा जी, ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास. Santiago is the central character of the novel. He is the hero of the novel. He is a fisher. ये देखिए, इन्होंने भी वही सेम गलती की हुई है. इसका मतलब है कि तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो एक ही जैसा ब्रेन रखते हैं. He is a fisherman by profession. He is very poor person. He lives in locality of fisherman. ये ठीक है, यहाँ पे fisherman. On the Havana in Cuba, he is a man of lean and thin body. He has deep wrinkles in the back of his neck. His hands have deep scars, and a result of handling fish. अच्छा जी, आगे आ गया है हमारे पास एक्सप्लेनेशन आ गई है, इसको चेक करते हैं. नो टाइम टू टर्न. ओके, ये स्टैंजा लिखा हुआ है. रेफरेंस देख लेते हैं. These lines have been taken from the poem Leisure written by William Travis. Okay, in this poem the poet describes that man is very. अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पे गलती क्या हुई. यहाँ पे गलती ये हुई कि मैन जो है वो तो जमा है और आपने आगे इज लगा दिया. मैन इज होगा और मैन आर होंगे.
ओके जी, मैन आर वेरी बिजी इन, अच्छा हिज लगा दिया, यानी कि यहाँ फिर आपको ए लगाना चाहिए था। मैन इज़ वेरी बिजी इन हिज लाइफ, ही कैन नॉट enjoy द नेचुरल ब्यूटीज। ओके, ही wants टू अर्न मच मनी। यहाँ मच मनी तो नहीं होता बच्चे, he wants to earn a lot of money and has no time for entertainment. अच्छा जी, in these lines the poet expresses his great sense of sorrow at the indifference of man to the charm and grace of beautiful woman. आ, देखिए यहाँ पे गलती क्या है, आ ब्यूटीफुल वुमेन, वो मैन, ठीक है। अच्छा, एक और मैंने बड़ी बड़ी ये नोटिस की है गलती बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये है कि वो लिखते हैं वो मैंस। बच्चे ये तो लफ्ज़ अभी तक ईजाद ही नहीं हुआ, ये कोई लफ्ज़ ही नहीं होता, ये मैंने बहुत गलती पकड़ी है बच्चों की, इसलिए इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ना ख्याल रखा करें। अच्छा जी, आगे क्या है, वुमेन, यहाँ आपने आ लगाया हुआ है और यहाँ पे आपने वुमेन को जमा कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं। देखें, लेट्स सॉल्व दिस वंस एंड फॉर ऑल। वुमेन जो है वो एक औरत होती है, ठीक है। वुमेन औरतें होती हैं या ख़वातीन होती हैं, ठीक है। और याद रखें कि वुमेन्स कोई लफ्ज़ नहीं होता, ये लफ्ज़ तो कहीं डिक्शनरी में भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये वाली जो गलती है ना बच्चे, ये तो मैंने हद से ज़्यादा स्टूडेंट्स की देखी है। मैन इज़ इंडिफरेंस टू द ब्यूटीज़, ओके, टू द दो दफ़ा लिखा हुआ है, beauties of nature at the same time. He does not have time to enjoy the beauty of dancing feet of a charming woman, ठीक है। आगे है जी, he does not have spare time. He does not have spare time to wait and see how a beautiful woman enriches her face with smile which begin in her eyes. He moves to his duties before he see the completion of her smile, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ओके, दिस लाइफ इज क्वाइट डल एंड uninteresting because it deprived man of his freedom to enjoy the good and beautiful things. Okay. अच्छा जी, आगे चलते हैं। Santiago is an old man. He's a fisherman by profession. He fishes also in a skiff in the Gulf. What is this? I don't know. ये आप चेक कर लीजिएगा ये क्या लफ्ज़ है। In the Gulf Stream in Havana, Cuba. The old man is a thin and gaunt with deep wrinkle at the back of his neck. His face has brown blotches. His hands have deep creased scars for handling heavy fish on the cords. Everything about him is old except his eyes. Okay. They are of same color as the sea and are cheerful and undefeated. He is the central character of the novel. Great. The story of the novel deals with the struggle against a big fish and some sharks. We can study his character under 5 aspects. Okay, great. The most important quality in the old man is the self-confidence. ठीक हो गया. He is old and weak, yet he has full of confidence in his strengths. Yet he has full of नहीं आएगा, yet he has full confidence, ठीक है। He has the fighting power against bad circumstances. He struggled for 48 hours against the big fish. 48 hours नहीं था, 48 days था, ठीक है। Okay. He fights very bravely against the shark. He is a great fighter. His fight with the sharks is remarkable. The first shark, the mako shark, takes away 1/4 of the meat of the old man's marlin. He is tired and exhausted. He loses everything, but he is not ready to yield.
I think he is not ready to be defeated. ठीक है. Okay, he is destroyed, but he is not ready to accept his defeat. The old man has the Christian virtues of humility, natural pity, and compassion. When the boy praises him, he is not flattered. He knows that others are better fishermen. Others दूसरे हैं better fishermen than he. Okay. अच्छा ये देखें, यहाँ पे then और then का फ़र्क मैं बता देती हूँ. Then ये यूज़ होता है तब के लिए, ठीक है. अच्छा, और देन होता है ए वाला देन, ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, ठीक है. अब जहाँ पे ये जैसे यहाँ पर बात है ना कि ही इज़ बेटर देन अदर फिशरमैन, ठीक है. तो यहाँ पे जो देन है ये कंपैरिजन वाला यूज़ होगा. ही इज़ काइंड टू हिज fellow beings. He believes in God and prays to him in trouble, ठीक है. He is compassionable होगा to all. उसके बाद है he feels pity for the birds who fail to catch any fish, but he knows that he is a harsh fisherman. अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ आप harsh नहीं कर सकते यूज़. harsh होता है जो रवैये में सख्त होता है. आप यहाँ पे tough का लफ्ज़ जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं. tough मोस्टली उन मैन या बॉयज़ के लिए यूज़ होता है जो ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हैं. अच्छा, he cannot do otherwise without, ठीक है. The old man is very humorous. He is never harsh and angry. Okay. He talks to the fish in a funny way. When he catches the fish, he apologizes to them and then kills them. ठीक है, क्योंकि हम ओल्ड मैन की बात कर रहे हैं ना और वो सिंगल है तो इसलिए हम यहाँ पे एस लगाएंगे. He praises himself for his courage and confidence. ठीक है. उसके बाद है he thanks God because the fish are not as intelligent, ठीक है, as intelligent as human beings who kills them. He prays to God that he will make a pilgrimage if he catches the fish. The old man has symbolic importance in the novel. He represents man in conflict with the forces of nature. He is only a simple fisherman, but through his great struggle, he rises, rises to the level of a hero. Okay. His relation with Manoline is also symbolic. The boy is the symbol of his lost youth. Okay. 1 second. It was a good attempt, so I'm giving it a star. Okay, so आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है. Okay, I think ये किसी और के टेस्ट का हिस्सा जो है ना वो यहाँ पे कनेक्ट होकर आ गया है. But let's just check. There was left nothing of the fish. He thought any of steering the boat. No. ये क्या है? थॉट्स तो हो ही नहीं सकता. अच्छा देखिए, बच्चे क्या करते हैं कि एस या एस का इजाफा जो है ना वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है. थिंक फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा हो सकता है, ये थिंक्स बन जाएगा. ज़ाहिर है ई एस तो नहीं लगेगा. इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है ना वो होती है थॉट. तो थॉट्स तो कोई लफ्ज़ हो ही नहीं सकता. ठीक है, थॉट इज़ अ सेकेंड फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का इजाफा जो है वो नहीं करते. अच्छा आगे चलते हैं. Actually, the knife between his spinal cord and brain. Okay, he also took one of the
fourth best meat of his big fish. मुझे इस लफ्ज़ की समझ नहीं आई. अच्छा जी. Then another shark came. His nose was like the shovel. He came with his mouth wide open. The old man left him with the fish. He drove the knife of the oar down into shark's brain. Okay. At midnight, the sharks came in a pack and attacked the fish. The sharks, I am unable to understand this word. On the fight, he struck them with the club. One of the sharks seized off the club and it was gone. The old man pulled the tiller from the rudder and beat the sharks with it. The sharks tore off pieces of meat of the big fish. The tiller was too gone. The man stood defeated. He let the sharks fatally. अच्छा ये यहाँ पे एक अच्छा वो ऊपर वाला हम चेक कर चुके हैं. The shark was fatally wounded. There was no life. No, there was no life. ठीक है. अच्छा यहाँ पे ये देर जो होता है ये वहाँ के लिए यूज़ होता है और THEIR वाला देर जो है ये उनके लिए इस्तेमाल होता है. पता होगा वैसे आपको. चले रिपीट हो गया. अच्छा जी. The shark took about 40 pounds of the meat of the big fish. He had sailed for 2 hours and rested in the back part of the boat. He saw 2 sharks coming towards him. He watched the sharks coming. अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने मुझे जो है ना वो कमेंट्स में ज़रूर बतानी है कि ये जो टेस्ट चेकिंग वीडियोस होती हैं क्या ये हेल्पफुल होती हैं और दीज आर जस्ट द वेस्टेज ऑफ टाइम. तो फिर ऐसा है कि मैं इन्हें बनाना बंद कर दूँगी अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है तो. He drove the knife again in the spinal cord of one of the sharks. The shark swallowed the best part of the fish. It died soon. Okay. Now the other shark began to shake the boat. He was eating the big fish. The old man thrust the knife into his hide. It wounded his hands and shoulders. The old man stabbed his in the left eye. Stabbed him. अच्छा यहाँ पे ना his होता है जब आप he का यूज़ कर रहे हो ना और his होता है उस सेंस में कि वो रखता है. लाइक अगर मैं कहूँ कि his book तो इसका मतलब क्या है कि मैं कह रही हूँ कि उस लड़के की किताब है. ठीक है. अगर him की आप यूजेज कर रहे हैं ना तो वो ऐसे होगा जैसे द ओल्ड मैन स्टैब्ड हिम कि उसने बूढ़े आदमी ने उससे मारा. तो उससे वाली सेंस में जो है वो आप him यूज़ करते हैं. his और him में फ़र्क होता है. ठीक है. In his left eye. Okay, the shark would not admit his fault. The old man drove. The old man saw a shark coming towards him. It was Mako shark. It had teeth like a man's finger. Actually, when they were clung together like claws, they were as long as the fingers of the old man. The shark began cut off the meat from the body. Began to cut off. कि उसने काटना शुरू कर दिया. Okay, the old man hit the brain of the shark with his harpoon. चलें जी. I think इंग्लिश वाले चेक हो गए. अब ये पाक अफेयर्स का टेस्ट है एक बच्ची का. Let me see if there is any other remaining portion of the English. Yes. अच्छा, describes the old man's struggle against the sharks. The old man saw a shark coming towards him. Towards आएगा यहाँ पे ऐसा आएगा. अच्छा यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आपने अगर फुल स्टॉप लगा दिया ना इधर आपका जुमला ख़त्म हो गया तो फिर यहाँ पे आई बड़ा आएगा. It was Mako shark. It had teeth like the fingers of the man. They were ये क्या है? I think close. वो जुड़े हुए थे, बंद थे.
पंजे की तरह. They were as long as the finger of the old man. The shark began to cut off the meat from the big fish. The old man hit the brain of the fish. The shark with his harpoon hit the brain of the shark with the harpoon. ठीक है. The shark was fatally wounded. ठीक हो गया. There was no life in the old man drove the knife between the spinal cord of the shark, but it also took 1/4 of the best meat of the big fish. Then another shark came. Then another shark came. His nose was like a shovel. He came with his mouth wide open. The old man left him. ये समझ नहीं आ रही मुझे क्या है. The big fish. He drove the knife towards the spinal cord of the shark. In the night, the shark came in a pack and attacked the big fish. The old man struck them on their head with the club, but the sharks tore off the. What is this? There was nothing of the fish except the. ये क्या है बच्चे? Eyes. EYES eyes. ओके, आगे देखते हैं. The shark took about 40 pounds of the meat of the big fish. He had sailed for 2 hours and rested in the back part of the boat. He saw 2 sharks coming towards him. He watched the sharks coming. They are detestable. नहीं, they are, वो हैं तो नहीं ना, आप कहानी सुना रहे हैं तो वर आएगा. They were detestable sharks. He drove the knife again into the spinal cord of one of the sharks. The shark swallowed the best part of the big fish. Now the other sharks began to shake the boat. यहाँ पे full stop. He was eating the big fish. The old man thrust the knife into his hide and wounded his hands. Okay, ठीक है, it is good. अच्छा, आगे चलते हैं. Poem है. These lines have been taken from the poem Tartary Ka Bara, written by Dela Murray. Okay, in this poem, the poet imagines himself the ruler of a romantic and colorful land Tartary. Tartary को थोड़ी सी इज्जत दें, टी बड़ा कर दें. Tartary is not the real country, but is an imaginary land conceived by the powerful imagination of the poet. The land of the poet, the land is full of many beautiful sights. He would enjoy all the luxuries of life. In these lines, ठीक है, lines है ना, ज़्यादा है तो इसलिए these लगेगा. In these lines, the poet tells us, poet single है तो s का इजाफा करेंगे, tells us that he wishes to become the ruler of an imaginary land Tartary. He wants to lead a loyal and magnificent life. The poet says that if he were the lord of Tartary, he would be the sole shareholder of the powers. His bed would be made of the tusk of the elephant. His throne would be made of the fine gold. The poet says that if he were the lord of Tartary, he would enjoy all the luxuries of life. The peacocks would display their beautiful feathers in his court. The forest of his kingdom would be visited by tigers. Okay.
अच्छा जी, इनकी जो राइटिंग है वो अच्छी है. These lines have been taken from the poem Tartary written by. ठीक हो गया. हाँ अच्छा. In this poem the poet wants to become a lord of Tartary. Again वही mistake T बढ़ाएगा. तमाम बच्चों का mindset जो है ना वो एक ही तरह का होता है. अच्छा जी. And the beauties he wants to keep all the authorities in his hand. He wishes to control the animal's nature, human world unquestioned. ठीक हो गया. The poet wishes to become the ruler of the imaginary land Tartary. He wants to lead a loyal and magnificent life. The poet says if he were the lord of Tartary, he would be the sole shareholder of all the powers. हाँ जी, यानी कि इसका मतलब है पोइट को जो है ना अपने हिसाब किताब से बिल्कुल डर नहीं लगता. वो चाहता है कि वो बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक होता. His bed would be made of tusk of elephant. His throne would. अच्छा, ये तो मैंने जो काम दिया हुआ है वो वाला पेज भी आ गया. Be made of fine and brilliant gold. The poet says if he were the lord of Tartary. Tartary बेचारे को थोड़ी सी इज्जत देते हैं, इसका टी बड़ा करते हैं बच्चों. He would enjoy all the luxuries of life. His kingdom surpass every other लैंड आएगा ना कि उसका किंगडम जो है वो हर सल्तनत से बालातर होता, हर सरजमीन से बालातर होता. The splendor and the beauty. The peacocks would display their beautiful features in his court. The forest of his kingdom visited by tigers. The pool of water would be seen packed with shining and bright fishes. The fins of the fishes would shine in the light of the sun. The fishes would swim freely and enjoy their life. अच्छा, वैसे तो कहते हैं कि जो फिश है ना उसका जो प्लूरल होता है वो फिश ही होता है, लेकिन फिशेस भी चलता है अब तो. चलें जी, इट वाज गुड अटेम्प्ट बाय ऑल द. मेरे टिक्स हिल गए हैं. चलें, दैट वाज गुड.